अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, काइंडली आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। पहला नंबर क्वेश्चन है, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट? वेंट सर्फ। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ मोर देन वन प्रोसेसर देन इट इज़ नोन एज मल्टी प्रोसेसर। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। Next question, a light sensitive device that converts dining printed text or other images into digital form is called scanner. A scanner output devices है। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डास इज कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कम्पैक्ट डिस्क? इसमें लेजर टेक्नोलॉजी यूज़ होता है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज CPU, central processing unit. C is the right option. Next question, which of the following are components of central processing unit? CPU, arithmetic, logic unit and control unit. ठीक है, B is the right option. Next question, analog computer works on the supply of continuous electrical pulses. A is the right option. Next question, which of the following is digital device? Select from the choice below. Digital clock, ये digital device है, is the right option. Next question, the computer that process both analog and digital is called hybrid computer. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSI स्टैंड फॉर मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर? Super computer are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs. C is the right option. ठीक है, many programs concurrently एक वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज है। इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? 4 नंबर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस? एलियन ट्यूरिंग इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU contains a control unit and a arithmetic logic unit. C is the right option. Next question है, which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? User interface is the right option. Next question, the first computer were programmed using machine language. ठीक है।